The summit meeting between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping at Hyderabad House in the national capital lasted 1.5 hours, during which all issues of mutual interest, including trade, economic, cultural ties, and contentious issues like the boundary dispute, were discussed. After the meeting, the Prime Minister stressed on the importance he attaches to strong ties with China. चीन हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी है. भारत के राष्ट्र निर्माण और विदेश नीति में पड़ोस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है. आज हम दुनिया के दो सबसे बड़ी आबादी वाले सबसे बड़े विकासशील देश हैं. दोनों देश बड़े पैमाने पर आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन में जुटे हुए हैं. इसलिए यह जरूरी है कि इन संबंधों में आपसी विश्वास और भरोसा हो. The central message sent out to China by the PM was that peace and tranquility in the border region is necessary for mutual trust and confidence, and once that is achieved, both countries can reinforce each other's economic growth besides taking regional and global growth to new heights. मुझे प्रसन्नता है कि आज भारत में 2 चाइनीज इंडस्ट्रियल पार्क बनाने पर समझौता हुआ है और उन्होंने 5 साल में $20 बिलियन की चाइनीज इन्वेस्टमेंट कराने का कमिटमेंट भी किया है. यह आर्थिक संबंधों का एक न्यू चैप्टर है. The Prime Minister raised with President Xi India's concerns over the worsening trade imbalance with China and sought improved market access and investment opportunities for Indian companies in China. हमारे आर्थिक संबंध क्षमता से बहुत कम है. मैंने उनसे इसकी चिंता प्रकट की कि हमारे ट्रेड की गति कम हुई है और ट्रेड इम्बैलेंस भी बढ़ा है. मैंने उनसे अनुरोध किया है कि हमारी कंपनियों को चाइना में मार्केट एक्सेस और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और आसान कराएं. China will continue to take active steps to give more market access for products from India, including pharmaceuticals, farm products, and fuels, to help address the trade imbalance between China and India. Both sides agreed to strengthen their strategic dialogue on regional and international developments and build closer cooperation on combating terrorism and extremism. एक शांतिपूर्ण और स्थिर क्षेत्र में हम दोनों देशों में के हित में है. इसमें एक शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध अफगानिस्तान की भी आवश्यकता है. आतंकवाद और अतिवाद के विरुद्ध हम अपना सहयोग बढ़ाएंगे. विश्व स्तर पर भी अपने साझे हितों पर सहयोग बढ़ाएंगे. The Prime Minister expressed his delight at the opportunity of hosting the Chinese President within months of his assuming office and said that both countries have decided to deepen the engagement at all levels and hold regular summit-level meetings. He said that India has invited Chinese investments in infrastructure and manufacturing sectors and revealed that discussions on civil nuclear energy cooperation are set to begin between the two countries. On the Bangladesh, China, India and Myanmar Economic Corridor proposal, the PM stressed that reconnecting Asia is important for its collective prosperity, but that requires a peaceful, stable and cooperative environment. Notably, China supported full membership for India in the Shanghai Cooperation Organization, even as it sought India's support for its participation in SAARC. The announcement that 2015 will be the Visit India year in China and 2016 the Visit China year in India underscored the trajectory that Sino-Indian ties are set to follow in the recent future. With Rishi Kumar and Sudhakar Das, DT News.